My Rights, a coalition of civil society organizations including trade unions, women's group, Dalit and minority rights organizations and human rights bodies, organized a protest opposing the Special Intensive Revision SIR for voter rolls. The coalition stated that the SIR has led to the deletion of over 7 crore voters across 10 states and 3 union territories, with crores more issued notices to prove citizenship. They alleged that new and arbitrary procedures under the SIR disproportionately affect marginalized communities, particularly women. In Karnataka, protesters claimed that voters' roll mapping processes was rushed and opaque, with booth-level officers under pressure to meet unrealistic targets, potentially leading to the exclusion of women, migrant workers, nomadic communities, and other vulnerable groups. The protest concluded with the demand that SIR should not be implemented in Karnataka until the Supreme Court delivers its verdict, and called on a Congress party in the state is openly opposed the exercise. See, the SIR has been touted as a process through which the Election Commission will go through all the names on the voters list, and whoever is no longer alive or who does not belong to India, etc., they want to revise the voters list. Except that on the face of this, if you say whatever the government is parroting as what is SIR, nobody will have a problem with it. But if the detail is in the the devil is in the detail, as they say. So if you see how the SIR is being implemented, it turns all constitutional safeguards and the law of the land on its head. Under the constitution, the power to ascertain citizenship is not with the election commission. That itself is the first problem with the SIR. Right now the election commission has become the deciding authority to say who is Indian, who is not Indian, who can vote. That is the first problem. The second problem is, it's not like only in 2026 we have found migrants who have come without papers and we have to deal with that problem. Right from, the 50s, we have seen instability in the region. People from different countries have always come to India. So for that, the Representation of People's Act already has a provision under which if there is any suspicion or any doubt about somebody's citizenship, whoever is raising the doubt has to prove that such and such a person is not Indian. Now what the SIR does, it says the BLO will come to your house and say, look, I think you are not Indian, prove to the Indian state that you are Indian. So it shifts the burden of proving that I am a citizen of this country onto me, whereas the actual legal constitutional framework expects the state to do that. And it is the union government and the foreign tribunals that have the right to ascertain citizenship, whereas now SIR has given that to the election commission. In sum, what this has ended up meaning is that instead of people choosing the governments have started choosing who will be their voters. So obviously they are going to choose people who think will vote for their party. In Lucknow, there is evidence to show that Muslims have been thrown out of the voters list in large numbers. Similar thing has happened in Bihar. And in Bihar, in fact, one woman, as per the PUCL NAPM National Tribunal report, who did not have the necessary documents to prove that she is Indian, was not even able to access her pension, her widow pension. So this is going to start with voting rights, and slowly people are going to become, living dead in this country, where no kind of benefits from the government they are going to be able to avail, and the government will keep saying you are Bangladeshi, you are Pakistani, you are Nepali, you are Sri Lankan, and who are going to affect really in India? Who are definitely the most affected will be women. Like I said about this woman who was, for example, not able to access her widow pension. The second will definitely be the working class, because now the documents that the election commission is accepting for proving citizenship is you need a passport, you need a matriculation certificate, etc. How many people are able to go to school and get 10th standard marks card, 12th standard marks card? If I'm a street vendor or if I'm a plantation worker, do you think I can go to the election commission and show a passport saying, look, I'm actually Indian? So who they really want to retain is the
core population that will vote for the party in power at the center. Equally, one has to condemn the state government of Karnataka for saying absolutely nothing about this, because in Karnataka, the people who voted the state government of Karnataka to power are the working class, are women, are Dalits, are Muslims. Today, when all their lives is in the lurch, Congress government has comfortably exited the scene. What message you would like to give it to the citizen right now watching you? The citizens should definitely learn more about the SIR. Right now, not everybody is as alarmed as we should be. I feel that we are not understanding the consequences of a process like this across the country. Now we will choose voters, then we will make one nation, one election, and then it will be one party, and then we are going to turn slowly into some kind of a dictatorship. So the consequences are very, very grave. And people, I would urge my fellow citizens to please use all constitutional methods to push back on this very draconian measure that the Election Commission has undertaken. Now, the BJP Sangha Parivar NDA government that is in parliament, that is ruling the country today, is inventing all kinds of excuses which the Election Commission of India repeats to beguile our people, to fool our people, to deny them their right to vote, which is one of the most fundamental right that the constitution of the country gives us, and that must be opposed tooth and nail. Gradually they are eroding all our lives. They are taking away economic freedom. They are taking away our freedom of speech. Now they are taking away our right to vote. So this must be opposed, and we should oppose it continuously without letting up. I have only one thing to say. What are our college professors? What are our college students doing? Now I know, personally I know many writers, many college professors who speak big words, who write big articles. What prevents them from coming to a place like this with their students, with their friends? You know, in any other country, the roads will be filled with people protesting. There will be thousands and thousands and thousands of people on the road protesting against a policy such as this. But that has not been happening in this country and in Bangalore in particular. Why? So that is what saddens me most. It is not only that the government is betraying the people. It is this, that the intelligentsia is betraying itself and the people of this country and of freedom everywhere. Okay. Thank you. What should people do watching this right now? Well, protest, organize protest, speak about it, speak up, come to protest such as this, show your protest, reject it, and do not elect a government that denies the rights of the people. SIR दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है। दस्तूर का आर्टिकल नंबर 324, 325, 326 और उससे बढ़कर ये कि आर्टिकल नंबर 14, 15 और 16 के ख़िलाफ़ भी है। इलेक्शन कमीशन, ज़ाहिर बात है कि ये भी एक दस्तूरी इदारा है। इसने पूरे मुल्क में रहने वाले वोटर से अपील किया कि SIR के अंदर वो शामिल होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि SIR ही ये दस्तूर के कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके मुखालिफ है वो, इसलिए आज हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया है यहाँ पे। इस प्रोटेस्ट में माई वोट माई राइट, येदियुरप्पा कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज और इसी तरह से जो और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम ये चाहते हैं कि कर्नाटक की सरकार उसका विरोध करे, SIR का विरोध करे। हम ये अपील करने के लिए आज यहाँ पर जमा हुए हैं। SIR के लिए 12 डॉक्यूमेंट्स को पूछा गया है। आप ज़रा सोचिए कि ये 12 डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे। जब आप 12 डॉक्यूमेंट्स देते हैं तब लोगों को मिलेंगे। और हम आपसे क्वेश्चन ये करते हैं, यहाँ के इलेक्शन कमीशन से भी क्वेश्चन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपने इस मुल्क में रहने वाले अवाम को डॉक्यूमेंट दिया है, क्या आप देने के लिए तैयार हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि SIR जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से लागू करने की कोशिश है, हम सब मिलकर के उसके विरोध हम कर रहे हैं। कर्नाटक की सरकार भी उसका विरोध करना चाहिए और जो लोग इलेक्ट होकर आए हुए हैं
उन लोगों की जिम्मेदारी है कि एसआईआर के सिलसिले में पब्लिक की वो रहनुमाई कर सकें। What is the message you would try to give him to government? गवर्नमेंट से तो हम कह रहे हैं, कर्नाटक सरकार से कह रहे हैं, Citizens, what you कर्नाटक सरकार से हम कर रहे हैं कि तुम पब्लिक की हेल्प करो, पब्लिक के बीच में जाओ, तुम पब्लिक की मदद करो, तुम डॉक्यूमेंट्स के लिए मदद करो, एसआईआर के मौके पर तुम मदद करो। हम ये कह रहे हैं कर्नाटक सरकार से, और इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि तुम्हारा फैसला सही फैसला नहीं है। So the main concern is like you are asking the documents like which are very rare to find the people like who are back into the 2002. So you are asking a birth certificate of a person who wouldn't have a name in the 2002 list and bring it, like asking them to bring such a certificate in that era like where it is very difficult for having a even a voter ID also. So all the 12 documents are mentioned for mapping purpose, which is I don't think so it's a feasible for all the people. So when you are making a revision, it should be a people friendly. You have making the voter ID, Aadhaar card, ration card, and even the for a special person UDID card. So even though you are having all these cards, but you are asking something else, which is very difficult to get it with respect to present context. So we have concern of that thing. Secondly, this is a basically we say this SIR is nothing but the backdoor of C and NRC, which they are bringing in the back end. Who are mostly affected because of this SIR? See, affected are the people from marginalized sections, people from Adivasi, okay, and most probably women, because they get married and they relocate and they are asking the document to bring their documents from original purpose. So mainly women are get affected from this SR process. So we want like Congress government should look into this and immediately stop this process. Okay, what is the message that you would like to give to the citizen as well as government? For a citizen, I'll give that please wake up and protest against this SR. It's very draconian, and also I request to raise voice against the Congress government. They are allowing to have this mapping process already, and after the mapping they are starting SR process. So we are against this process. It's nothing but they are questioning our citizenship. We have a birthright citizenship according to our constitution. They are saying it's against constitution. So rise and make a right of your vote. Okay. This verification process is becoming very complex. Yes. So you're telling it to the government to make it very simple. We are saying do a revision. What is in the provision? Okay. Do a intensive. There is special revision, which is also in the provision. But what is this special intensive revision, which is not at all in the process, like in the draft? So you are making an extra process which is not been mentioned. Even the court also said the same thing. So we are saying, don't do this process. Do what is provisionable, which is allowed. Okay. So people who are watching right now, what they have to do regarding this SIR process? We say just say no to SIR. One of the most critical things about SIR is elimination of electoral right among predominantly middle class, lower middle class, and people who are subjected to forced migration in search of labor, in search of wanting to keep their life going ahead. See what has happened in the states which has already seen what SIR has done, like Rajasthan, Bihar. Lakhs and lakhs and lakhs of people belonging predominantly from the lowest strata of the society have lost their right to vote. Usually, if somebody takes the electoral pattern, or who are these voting members in the society, predominantly the voting members in the society come from the middle class and the lower middle class. And if they want to eliminate the possibility or shatter the idea of middle class and the lower middle class and the laboring masses, which means they are going back to some sort of uncivilized societal status quo. Election should bring in some sort of justice to the people in society in general. But this particular movement by the Election Commission is discarding people. That is the brute fact of SIR. And in saying SIR, they are also very discreetly bringing in CAA and NRC. CAA and NRC. So these are certain things that we should as citizens take into serious considerations. This is my first take. On the second level, it has no positive regard at all.
There is no ounce of positivity. There is no ounce of political positivity or social positivity. It is very devastating, and we shouldn't tolerate political social devastation in our societies. This is what I have to say. What is the people that they should do regarding this? We have to come together like this and make sure that we are resisting this. We are not okay with this. People should come out in streets like how they came out for CAA and NRC. SIR का जो आज प्रोटेस्ट बेंगलोर में चल रहा है, ये आप लोग सब लोगों को जानना चाहिए कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं पे भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि हम 2002 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किए हैं, वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं था, वो इंटेंसिव रिवीजन था। तो ये लोगों में गलत फहमी फैला रहे हैं। एक तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है फॉरेनर्स को इंडिया से निकालने के लिए हम कर रहे हैं। आप अब जो है 6 करोड़ लोग जो है 12 स्टेटों से निकल चुके हैं। ये लोग क्या फॉरेनर्स हैं? ये सवाल खड़ा होता है। तो इसलिए ये लोग जो फॉरेनर्स बोल के निकाल रहे हैं, वो इस ज़मीन के लोग हैं, वो दलित है, ट्राइब्स है, माइनॉरिटी है, वो यहाँ के लोग हैं। इन लोगों को आप कहाँ निकालोगे? ये एक नाइंसाफ़ी है, ये गलत है। इसलिए इसको समझना चाहिए। SIR कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन हटाना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं, अपना कुछ एक मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन हटा देंगे तो यहाँ जो मिडल तबका है, गरीब तबका है, दलित है, ट्राइब्स है, माइनॉरिटी है, ये लोग जो है सेकंड क्लास सिटीज़न हो जाएंगे। ये लोगों को कोई राइट नहीं रहेगा। इसलिए एक तो जो NRC जो हुआ था, NRC को जो है सब लोग जो है खिलाफ करें, लेकिन NRC के नाम पर SIR लेकर आया है। इनको NRC जो है, जो होम मिनिस्ट्री जब NRC करने की कोशिश की लेकिन वो फेल रहे, तो अब जो है यूथ कमीशन के लेकर NRC चला रहे हैं। या यूथ कमीशन जो है, कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, इसको जो है सिटीज़नशिप का सवाल उठाने की कोई हक़ नहीं है। वो हमारी होम मिनिस्ट्री करेगी। लेकिन ये सवाल उठा रहे हैं, हर जो डॉक्यूमेंट ये पूछ रहे हैं, ये सिटीज़नशिप के डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं। कहाँ पे सिटीज़नशिप डॉक्यूमेंट पूछने का इनका हक़ नहीं है, इनका राइट नहीं है। कमीशन का जो काम है, इलेक्शन कमीशन का, एक तो नए वोटर ID बनाना है, दूसरा जो डेथ हुए उनका डिलीट करना है, जो डुप्लीकेट है वो डिलीट करना है। ये 3 चीज़ छोड़कर ये सिटीज़नशिप पूछ रहा है। ये बहुत बड़ा रॉन्ग मैसेज जो है लोगों में जा रहा है। और लोगों को जो है एक्टिव होना होगा। और जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो SIR का अभी जो कर्नाटक में मैपिंग का प्रोसेस जो चल रहा है, इसमें जो है बहुत सारे लोगों के अभी जो है मैपिंग नहीं हो रहे। इसलिए इनका जो 2002 का जो वोटर लिस्ट है, इसमें बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है, लेकिन लोग वोट डाले हैं, फिर भी नाम काटे हैं। तो बहुत सारे लोगों के नए लिस्ट में भी नाम कटे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग जो है अभी डरे हुए हैं। तो इस तरह डरा के अभी वेस्ट बंगाल में 110 लोग डेथ हुए हैं डर के। तो इस वजह से एक तो हमारा इलेक्शन कमीशन को ये बता रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं क्लियरली लोगों को बताइए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। BLO को ट्रेनिंग नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट BLA को एक्टिव नहीं कर रही। और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, ये दलित, ये ट्राइब्स, ये माइनॉरिटी, ये पूरे उनके वोट से जो है यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस जीती है। तो इसके बावजूद इन लोगों को बचाने के लिए कांग्रेस आज नहीं है। एक्टिवली जो है कांग्रेस के BLS काम करना होगा। जो मैपिंग का जो प्रोसेस चल रहा, ये लोगों को समझाना होगा। और जो लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बना के देना होगा। इसलिए एक एग्जांपल हमारे पास है, केरला की स्टेट गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को डॉक्यूमेंट बना के दे रही। और केरला की स्टेट गवर्नमेंट के जो BLA होते हैं, बूथ लेवल एजेंट, वो एक्टिवली काम कर रहे। तो इसलिए जो इलेक्शन कमीशन जो लागू करेगा उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट एक्चुअली काम कर सकती है। या तो मैपिंग अच्छे से करा सकती, और जो SIR का जो भी चल रहा है इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में सवाल खड़ा कर सकती। तो ये काम जो है कांग्रेस को करना चाहिए। और जो भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन से जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट में है, वो लोगों को एक्टिवली जो है इस जो है कैंपेन में और इस प्रोटेस्ट में आना होगा। हर जिले और तालुका लेवल पे ये प्रोटेस्ट करना होगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है। ನಾನು ಈ SIR ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಡ 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 ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಡವಸರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಟಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರಣ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ SIR ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ನೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 2002ರ ಓಟಿನ ಒಂದು
ಓಟಿನ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಓಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಈಗಿನ ಇರುವಂಥ 25-26ನೇ ಜನಗಳ ಗಣತಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಓಟಿನ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ SRI ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಟುಗಳ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇರಲು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಓಟು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ. 18 ವರ್ಷ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು SIR ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಓಟಿನ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಟಿನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಟಿನ ಹಕ್ಕದಾರರಿಗೆ ಓಟಿನ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವರು, ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರು, ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಟಿಸನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ. BJP ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪಕ್ಷದವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. SRI ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾರಣ? SRI ಮಾಡಲು ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹರು? ಇಲ್ಲಿ SRನ ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗೆದು ಬಡವರನ್ನು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಕಿದವರು ನಮ್ಮಂಥ ಬಡವರ ಓಟುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀಟಿನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಡವರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವಲಸಿಗರು ಬೇಕಿತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂಥರನ್ನು ಬಡಬಗ್ಗಲಿಗರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. SRI ಮಾಡಬೇಡ, SRIಯಿಂದ ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗ್ತಿದೆ, ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಅಂಥ ಓಟಿನ ಹಕ್ಕದಾರರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು, ನಮ್ಮ ಗಣತಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಬಡ ಬಗ್ಗಲಿಗರೇ ಆಗಲಿ, ಬಡವರೇ ಆಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು BJPನೇ ಆಗಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ತರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುನಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಡವರೇ ಆಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮೇ ಆಗಲಿ, ನಾವೇ ಒಂದು ಯುನಿಟಿ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇವರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ SRI ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಮತ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ನಾವಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಹಕ್ಕು. 18 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ, ಪುರುಷರಿಗೂ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.